أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Data analysis for practitioners and using primary and secondary data lesson 2. I welcome you all. इस लेसन में हम खास फोकस रखेंगे प्राइमरी डेटा के ऊपर और उसमें हम फिर ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा, व्हाट इज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द डेटा एंड देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जब भी हम प्राइमरी डेटा की बात करते हैं तो यू बी seeing the slide of types of primary data। तो वो ये हमारे पास वो डेटा होता है जो हम रॉ फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। रॉ फॉर्म से मतलब ये होता है कि this data can be either in the form of surveys, this data can be either in the form of interviews, this data can be either in the form of observations, experiments, case studies and actionable research। तो उधर से जब ये डेटा हमारे पास आता है तो हम इसकी जस्ट एक क्लीनिंग करते हैं और उस क्लीनिंग के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। हम इसकी किसी किस्म के प्रोसीजर से नहीं गुजारते, किसी किस्म के प्रोसेस से हम इसको नहीं गुजारते और इसको हम रखते हैं वन पॉइंट इन टाइम ही रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी डेटा एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा। Now further moving on, what are different formats of primary data? There are a number of formats. इसमें सबसे पहले है textual data, which includes written responses to surveys or interviews as well as written notes from observations। यानी कि वो टेक्स्ट जो हम एक सर्वे करने जब जाते हैं तो उधर से हम कुछ रिस्पॉन्सेज लिख के लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक सेंटेंस दो सेंटेंस हम आंसर लिख रहे होते हैं, या फिर यह है कि हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बेस पे एक रिस्पोंडेंट जो है हमें एक ब्रीफ सा रिस्पांस देता है। हम फिर उसमें से वो स्पेसिफिक टेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज मोर कनेक्टेड टू आवर क्वेश्चन। सिमिलरली दिस गोज फॉर इंटरव्यूज एज वेल, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं ये तो दो एक कॉन्टेक्चुअल चीज है या फिर ये कि टेक्स्ट बुक्स की बात है। जब हम प्रैक्टिकली एक चीज करते हैं तो उसमें यही होता है कि बास टाइम रिस्पोंडेंट ओपनली उस चीज को बताने की एक विश रखता है कि मैं इस चीज को ओपनली बताऊं, और वो ओपनली बताते हुए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक रिस्पोंडेंट है जिसके पास मैं गया और उससे मैंने पूछा कि वो एक चैलेंजेस के हवाले से क्वेश्चन है एक बिजनेस पर्सन का को मैंने किया, तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े गवर्नमेंट की करंट पॉलिसीज को लेके। आई माइट बी हैविंग 10-20 ऑप्शंस एज वेल, लेकिन सिर्फ उसको इतना पूछना और वो शुरू हो जाएगा कि 1947-1948 से मेरी कंपनी स्टार्ट हुई, मेरा बिजनेस इधर से स्टार्ट हुआ, एंड थ्रू दैट एरा व्हाट वर डिफरेंट चैलेंजेस एंड व्हाट वर डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जितनी गवर्नमेंट्स आई, हर एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई उससे मेरे बिजनेस को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। सिमिलरली जो है इसमें फिर एक और चीज आ जाती है जब हम ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं और पॉइंट नोट टेकिंग करते हैं, उधर से भी हम टेक्सचुअल डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। द सेकंड फॉर्मेट ऑफ द प्राइमरी डेटा इज न्यूमेरिक डेटा, which include data collected through structured surveys or experiments such as ratings, rankings or test scores। यानी कि लिकर्ट स्केल की हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, या फिर यह है कि हमने कोई फिक्स एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है और उसमें हमने एक नंबर दिया हुआ, नंबर से ही हमने रिस्पांस को डिफाइन किया हुआ है, या फिर यह कि हमने एक रेट दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ है कि दिस इज गुड, बैड, वर्स्ट, व्हाटसोएवर, तो हम उसके बेस पे जो नंबर डिफाइन करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा। ऑडियो डेटा,
ऑडियो डेटा इंक्लूड रिकॉर्डिंग्स ऑफ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स और अदर डिस्कशंस। यानी कि एक इंटरव्यू हम लेते हैं या एक ग्रुप डिस्कशन होती है या एक पैनल डिस्कशन भी हम इसमें अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी पूरी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है तो उस रिकॉर्डिंग की बेस पे फिर हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। मतलब ये वो जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास एक ऑडियो डेटा है, उससे फिर ट्रांसक्रिप्शन करके हम टेक्सचुअल डेटा भी फिर निकाल सकते हैं, हम न्यूमेरिक डेटा भी निकाल सकते हैं और उसके अलावा फिर हम उसके बेस पे जो टेक्सचुअल या न्यूमेरिक डेटा में एक खास रिस्पॉन्स है उसका रीजन भी हम बता सकते हैं उस ऑडियो डेटा की मदद से। नेक्स्ट इज द विजुअल डेटा। Visual data include photographs or videos of events, behaviors or phenomena being studied. ऊपर हमने एक डिफरेंस है ऑडियो और विजुअल में कि एक में हम what we are seeing from our eyes is the visual data and what we are hearing from our ears is audio data. Sensor data. Sensor data include data collected through electronic sensors such as temperature reading, GPS data or motion data. And lastly, another form of primary data जो खासकर मेडिकल या लेबोरेटरी साइंसेज में यूज होता है वो है बायोलॉजिकल डेटा विच इंक्लूड डेटा कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल सैंपल्स सच एज ब्लड, यूरिन और टिश्यू सैंपल्स। मेनली जब हम प्राइमरी डेटा की बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा में हमारे पास जो सबसे बड़ा एक टूल है वो है सर्वे करने का। Now what is survey? Survey, it is a method of collecting data or information about a group of people and things, evaluation of services and policies. For example, हम कहते हैं factors influencing child labor या determinants of child labor के what are those determinants, मतलब बच्चे की अपनी क्वालिटीज भी हम उसमें इवेल्युएट करते हैं, उस वो ये भी एक सर्वे में आ सकता है। फिर उसके हाउस होल्ड की क्वालिटी या उसकी हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ड्यूरिंग कोविड-19 एंड टीचर्स इवेल्युएशन अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो टीचर्स हैं वो किस किस्म की एजुकेशन देते हैं। इसमें ये सर्वेज या तो स्टूडेंट्स खुद भी कंडक्ट करते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स भी ये सर्विस कर रहे होते हैं एंड इवन गवर्नमेंट भी ये सर्विस करती है और ये फिर रिसर्च से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो भी इन सर्विस में ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। नाउ व्हाट इज यूज ऑफ सर्वे? हम सर्वे की बात तो करते हैं कि सर्वे कर लिया, ये कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, ये एनालिसिस कर लिया, ये वैल्यूज इधर ले, ये रिस्पॉन्सेज दिया, ये सारे काम हम डिस्कस तो कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि इस सर्वे का एक्चुअली यूज क्या है। जब हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो एक यूज तो यह है कि व्हाट एक्चुअली इज डोनर या द पार्टनर इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, हम उनकी नीड्स और उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम एक एज अ प्रैक्टिशनर जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है सोशल रिसर्च, और इसमें हम ये बात करते हैं कि इट इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स। यानी हम एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में हम ओवरऑल एक जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम सर्वे करते हैं। मार्केट रिसर्च, देन कम द मार्केट बिहेवियर, जिसमें हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिलेशनशिप की बात करते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हाउ पॉलिसीज इज अफेक्टिंग द मार्केट। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेल्थ रिसर्च। हेल्थ रिसर्च is collecting data from patients and doctors about health-related issues, services provided, treatment of patients, and different other factors like hospital services, clinical services, medicine provision. तो इस किस्म की रिसर्च के लिए भी हम सर्वे करते हैं। साइकोलॉजी, researching personality traits, preferences, and behaviors. For example, how person X is behaving
to certain environment or certain situation where he is either living or where he is either working or where he has been kept for some time. तो इस केस में भी हम सर्वे कर लेते हैं. Policies and politics, researching policies and political structure and government functions. पॉलिसी के केस में हम सर्वे तब करते हैं जब फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स इनिशिएट करती है, या फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 2018 से 2021-22 के दरमियान हमारे पास एक सिनारियो बिल्ड हुआ. वो सिनारियो और सिचुएशन थी कोविड की. कोविड में जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के केस में, उन्होंने कुछ पॉलिसीज की बात की कि हम इन पॉलिसीज की वजह से बिजनेस सेक्टर को फायदा देंगे, बिजनेस सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को हम इंसेंटिवाइज करेंगे. तो उन पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस आ गई. जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी हमारे पास हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो भी आ जाता है कि what actually is their manifesto and what are the factors on which they are doing this politics, and based on that will they be helpful or will they be working for the people when that political party comes into the government, yes or no. तो इन सारी चीजों के इर्द हम करते हैं सर्वे. जनरली जब हम सर्वे की बात कर आगे लेके चलते हैं तो सर्वे में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आगे हम डिटेल से भी बात करेंगे कि जो भी स्टेप्स हैं इस पे फर्दर हम डिस्कशंस भी करेंगे, और उसके अलावा हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे. वी विल बी एलैबोरेटिंग दीज ऑल थिंग्स. तो इसमें एक चीज, इसमें हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं वो आ जाते हैं. स्टेप 1 में वी डिफाइन द पॉपुलेशन एंड सैंपल. सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज आवर टारगेटेड पॉपुलेशन, जिसके अंदर जाके हमने सर्वे करना है. व्हेन वी हैव डिफाइंड आवर पॉपुलेशन, उसके बाद हम करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक की तरफ आते हैं कि व्हाट एक्चुअली एंड हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू कलेक्ट दिस सैंपल, जिसके बेस पे हम अपना सर्वे करेंगे. इसमें फिर डिफरेंट सैम्पलिंग एक्सरसाइजेस भी आती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग भी आती हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन सिनेरियो के, एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के व्हिच टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक और व्हिच टाइप ऑफ सैम्पलिंग एक्सरसाइज विल बी बेनिफिशियल है. Step 2 is decide on type of survey, whether we are doing qualitative or quantitative survey, and in that we further go deep into whether we are doing the cross-sectional surveys, we are doing the longitudinal surveys, or we are doing the retrospective surveys. Step 3 is design the survey questions, how we are going to design the survey questions and what it actually is need and demand of that particular exercise. तो हम पूरा उस सिनारियो में ले आते हैं अपने कि हमने क्वेश्चंस किस तरह डिफाइन करने हैं. Step 4 is distribute the survey and collect responses. Step 4 यहाँ पे क्योंकि 2 दफा मैंने इसको मेंशन किया इन बोथ टाइम इट्स स्टेप 4 और दोनों की हेडिंग सेम है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से इलैबोरेट कर देता हूँ कि फर्स्ट वी कैन से दैट इट्स अ पायलट एक्सरसाइज. स्टेप 1 इसमें हम इनिशियली एक क्वेश्चनर डिजाइन करके और उसको अपनी तरफ से तो हम फाइनल कर लेते हैं, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करके उसके ऊपर जब फिर फीडबैक आ जाता है या वो गैप्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये गैप्स इन क्वेश्चनर में, वी रेक्टिफाई, we finalize the questionnaire, and then we again distribute the survey and collect responses. Now, what is the population? It is a target. It is a specific group of people that you want to find out about. This group can be very broad or relatively narrow. For example, population of Brazil, Pakistan, whatsoever. US कॉलेज स्टूडेंट्स या ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज आ जाते हैं हमारे पास.
second generation immigrants in the Netherlands, customer behavior, even फिर हम जेंडर स्पेसिफिक भी जा सकते हैं इसमें. In population, two things to remember: that your survey should aim to produce results that can be generalized to the whole population. यानी कि जो हम सैम्पलिंग टेक्निक आगे यूज करें तो हम रिजल्ट्स को ओवरऑल पॉपुलेशन का रिफ्लेक्टिव उसको जरूर बनाएं. That means you need to carefully define exactly what you want to draw conclusions about. You know कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को टीबी है, हम टीबी के केस में हम सर्वे कर रहे हैं, हमने टीबी पेशेंट से करना है और हम उसको करने जिसके सर में दर्द है, तो हम फिर कहेंगे नहीं सर दर्द वाले को भी टीबी के केस में भी हम टीबी के कंक्लूजन हम ड्रॉ करना है. नहीं, there should be clear cut target and clear cut specification what actually be the conclusions or what actually is our sample and what actually is all things about. Several common research biases can arise if your survey is not generalizable, particularly sampling bias or selection bias. The presence of these biases have serious repercussions for validity of your results. Exactly. वही बात कि टीबी के केस में मैंने सर दर्द वाले को भी सर्वे किया, मैंने जुकाम वाले को भी सर्वे किया, मैंने बुखार वाले को भी सर्वे किया, मैंने जिसकी टांग टूटी है उसको भी सर्वे किया. तो इससे क्या होगा? कहने को तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, कहने को मेरे पास एक एनालिसिस आ जाएगा, but this type of exercise will lead to sampling bias, selection bias, and even it will affect results of the whole exercise. Now samples. It's rarely possible to survey the entire population of your research. It would be very difficult to get a response from every person in Brazil or every college student in US. Instead, you will usually survey a sample from the population. अब अगर मैं एक बात करूं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बैठा हूं इस वक्त और मैं पूरी यूनिवर्सिटी को सर्वे नहीं कर सकता बिकॉज 4-5 हजार 6 हजार स्टूडेंट्स को इकट्ठे करना या हर एक के पास जाना, फिर हर बिल्डिंग में जाना, हर क्लास में जाना, that will take a lot of time and that will take a lot more of resources from me. तो मुझे सैंपल को इस तरीके से डिफाइन करना होगा कि वो मैं उसकी बेस पे मैं पूरी यूनिवर्सिटी को जनरलाइज कर सकूं. The sample size depends on how big the population is. You can use an online sample calculator to work out how many responses you need. हाँ, different tools हैं कि हम sample calculator को हम use कर सकते हैं, but it again depends on how accurate that calculations can be, and it again depends on how accurate your information is going to be. It again depends upon whether what exercise you're doing is it मतलब ये कि क्या वो उस सैंपल और उस पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही, तो ये सारा कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है. There are many sampling methods which we will be further discussing in lectures coming that allow you to generalize to broad population. In general, though the sample should aim to be representative of the population as a whole, the larger and more representative your sample, the more valid your conclusions be. Again, beware of various types of sampling bias as you design your sample, particularly self-selection bias, non-response bias, under-coverage bias, और survivorship bias. Different type of biases इसमें आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें खबरदार रहना पड़ेगा. इन सब चीज़ों के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ेगा कि how to tackle these biases to get more valid responses and more valid conclusion. Now moving towards type of surveys. The cross-sectional surveys. These surveys are administered to a small sample from large population within a small time frame. This type offers a researcher a quick summary of or analysis of what respondents think or at that given time. These surveys are short and ready to answer and can mere opinion in
one particular situation. Similarly, you can consider hypothetically an organization conducts a study related to breast cancer in America and they choose a sample to obtain cross-sectional data. This data indicated that breast cancer was most prevalent in women of African American origin. The information is from one point in time. Now, if the researcher wants to dwell more in depth into the research, she can deploy a longitudinal survey. Cross-sectional surveys are particularly focusing on one point in time or at any particular situation where we are going to do when we are going to do that survey. अगर deeply जाना है into the research and have more information, then the one conducting the survey should move towards the longitudinal survey, which is our next type. Or those surveys that help researchers to make an observation and collect data over an extended period. There are three main types of longitudinal studies: trend surveys, panel surveys, and cohort surveys. Now, trend surveys are deployed by researchers to understand the shift or transformation in the thought process of respondents over some time. They use these surveys to understand how people's inclination change with time. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट आई उसकी पॉलिसीज को लेके फिर अगली गवर्नमेंट आई उसकी पॉलिसी को लेके ये एक टाइम फ्रेम हो गया तो इस how behavior changes from one government to another or how behavior changes from one policies of one government to another, तो ये हमारे पास एक ट्रेंड बनता जाएगा. This is called the trend surveys. Another longitudinal survey type is the panel survey. Researchers administer these surveys to the same set of group of people over the years. Panel surveys are expansive in nature and researchers try to stick to their panel to gather unbiased opinions. ये सबसे मुश्किल तरीन सर्वे होता है क्योंकि इसमें ओवर द पीरियड भी हम जा सकते हैं या फिर हमें रैंडम सैम्पलिंग भी हम जब करते हैं या फिर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जब करते हैं तो उसमें हमें बात पैनल से सेम रिस्पोंडेंट से ही हमें बात करनी होती है, सेम रिस्पोंडेंट से ही हमें डेटा लेना होता है. इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि उस जगह से जहां भी पहले वो था उधर से वो मूव कर गया. But this makes this survey more expensive in nature and more challenging in comparison to other type of surveys. The third type of longitudinal survey is the cohort survey. In this type of survey, categories of people that meet specific similar criteria and considered from target audience. Same people don't need to create a group. However, people forming group should have certain similarities. यानी एक कोहोर्ट है हाउस, एक मोहल्ला कोहोर्ट हो सकता है, एक इलाके में हम कोहोर्ट्स बना सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते कि मोहल्ला और मार्केट को हमने कोहोर्ट बना दिया क्योंकि उधर हाँ लेट्स से घरेलू खवातीन का एक कोहोर्ट हम बना सकते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों का एक कोहोर्ट हो सकता है, मार्केट का एक अलग कोहोर्ट हो सकता है. ये नहीं है खवातीन का मार्केट वालों के साथ करने, खवातीन का स्कूल के बच्चों के साथ करने, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं. There should be similarities and there should be certain set of objectives behind constructing that particular cohort. Retrospective survey. It is a type of study in which respondents answer questions to report on events from the past. By deploying this kind of surveys, researchers can gather data based on past experiences and beliefs of people. This way, unlike a longitudinal survey, they can save the cost and time required. Previous governments ने क्या किया? उस बिहेवियर को या उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम फिर जो सर्वे करते हैं वो होते हैं हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे. सर्वेज की तो हमने बात कर ली. Briefly going into this slide, which will be our next lecture as well. हम जब क्वेश्चनर ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो number of steps that should be considered and they are very important in one way or another. What
actually is a research question or what actually are the research questions of doing that survey, तो उसके बेस पे हमें क्वेश्चंस को नैरो डाउन करना चाहिए. डेवलपिंग एंड ड्राफ्टिंग अ थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. खासकर जब हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर में जेनेरिक टाइप सा क्वेश्चन होता है या फिर यह कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसकी कोई थियोरेटिकल रेलिवेंस हमें नजर नहीं आती या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ता है गोइंग डीप डाउन इनटू द लिटरेचर. इट शुडंट बी द केस. जब भी हम क्वेश्चनर शुरू में बनाते हैं तो those things as a researcher, as a research practitioner, those things should come first. कि क्वेश्चनर के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो जिसके बेस पे फिर अगर हम कल को उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं तो we should be able to draft that theoretical or conceptual framework. What is the target respondent and what are the type of questions we are going to ask from the respondent? It includes open-ended questions, Likert scale, or single answer questions. In the coming lectures on primary data, we will be discussing in lecture 3, there will be drafting a questionnaire, then it will be followed by data entry into the system, how we enter data into the system, फिर डेटा क्लीनिंग कैसे की जाती है, डेटा एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे, एंड देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. जब ये प्राइमरी डेटा की सीरीज खत्म होगी तो देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी डेटा. उसमें फिर हम टाइम सीरीज एनालिसिस की भी फर्दर हम बात करेंगे. These are the two references and there are many other relevant materials present. Thank you very much.